Good morning, future auditors. This is Subhan Mirchawala from Mirchawala Hub of Accountancy, and I'm the faculty of F8, Audit and Assurance. I've been teaching this paper for last 17, 18 years. We got some nationwide, local and global positions. I just love this paper. अच्छा उसके पीछे वजह ये है सबसे the first thing is so interesting paper. मैं sometime ये कहता हूँ क्लास में बच्चों से कि especially when we do apply audit procedure मैं कहता हूँ it's a common sense कि ये paper नहीं है एक दफ़ा once your concepts are cleared ये एक common sense है. Then I love this paper. एक वजह ये भी है कि I have local and global exposure, especially working here in corporate America and Texas here. उसका भी एक exposure और I try to leave no gray areas. यानी कॉन्सेप्ट्स मैं चाहता हूँ कि बच्चों के हमेशा क्लियर रहें, ब्लैक एंड वाइट. एंड दिस इज़ व्हाट दिस सब्जेक्ट डिमांड्स कि एक दफ़ा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, यानी मैंने कहा ना, नो मोर ग्रे एरियाज. वंस योर कॉन्सेप्ट्स आर ब्लैक एंड वाइट, देन यू डू द पास्ट पेपर्स. और हमारा जो यूनिक पॉइंट है इसमें वो ये है कि नॉट ओनली वी डू द कॉन्सेप्ट प्लस द पास्ट पेपर, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द फीडबैक. कि जब स्टूडेंट्स जो अटैम्प्ट कर लेते हैं पेपर्स, आई पर्सनली राइट देयर पेपर्स, मार्क देयर पेपर्स एंड आई गिव देम फीडबैक. तो ये चीज़ें तो एंड में मैं ये कहूँगा कि वंस अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एंड फुल ऑफ लर्निंग. और स्पेशली जब इसका आगे आप पेपर देखते हैं विच इज़ P7, तो ये पेपर इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है बिकॉज दिस इज़ द बेस थिंग and then you have the P7 in the final level. So I welcome you all at Mirchawala Hub of Accountancy, F8 Audit and Assurance, and wish you good luck and happy learning. Thank you.